Alright ji, we are going to discuss agency, or agency will lead to the corporate governance, which is one of your chapter of the FBT or BT, business and technology. It's a very important chapter. देखिए, you know very well कि जब हम companies की बात करते हैं, limited companies की, you know it's a type of business. ये चीज हमने काफी डिटेल के अंदर डिस्कस की हुई है कि when you talk about the limited company जो क्या है, वो एक टाइप ऑफ बिजनेस है. जब लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं तो इट्स अ टाइप ऑफ बिजनेस. और लिमिटेड कंपनी दो टाइप्स की हैं आपके पास. एक आपके पास जो है वो प्राइवेट लिमिटेड है, और दूसरा आपके पास जो है वो पब्लिक लिमिटेड है. सो लिमिटेड कंपनी इज अ टाइप ऑफ बिजनेस. और मैंने आपको बताया कि इसमें प्राइवेट लिमिटेड है. प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या है कि दोज हु इशू द शेयर्स अमंग्स द फ्रेंड्स एंड फैमिली, या जिनके शेयर्स जो हैं वो आपके पास स्टॉक एक्सचेंज से नहीं मिलते. और पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसके शेयर्स पब्लिकली ट्रेड होते हैं, अवेलेबल होते हैं फॉर द पब्लिक इन द कंट्रीज स्टॉक एक्सचेंज. तो हम सिंपली उसको कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी. सो प्राइवेट लिमिटेड इज अबाउट द F&F, shares amongst the friends and family, and the public limited is available for public. That means आप इसको जाके tradable on stock market. अब जब आप लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं तो हमने कुछ फर्दर चीजें भी डिस्कस की हुई थी कि जो जब आप कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन का क्या मतलब होता है कि कंपनी इटसेल्फ एक पर्सन है. कंपनी अपने नाम से एसेट्स परचेज करती है, कंपनी अपने नाम से लोन्स लेती है, कंपनी को सू किया जाता है, कंपनी कैन सू, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये फीचर्स हमने पढ़े थे. फिर साथ ही हमने ये भी कहा था कि जब हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो इट्स अ लीगल एंटिटी. लीगल एंटिटी का क्या मतलब है कि कंपनी एक खास लीगल प्रोसेस से होके गुजरती है, और एक फॉर्मल मैकेनिज्म के बाद जाके कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी रजिस्टर होती है. सो दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि यार ये एक लीगल एंटिटी. अब इसका एजेंसी के साथ क्या ताल्लुक है, हम वी आर गोइंग टू बिल्ड रिलेशनशिप. सबसे पहले एजेंसी को एक्सप्लेन करते हैं कि एजेंसी होता क्या है. एजेंसी इज अ relationship between a principal and the agent. Agency is the relationship between the principal and agent, and in fact principal hires the agent to work on his or her behalf. प्रिंसिपल खुद इन्वॉल्व नहीं होता. तो प्रिंसिपल एक पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करने के लिए एक एजेंट हायर कर लेता है, और वो एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है. एंड इट इज द ड्यूटी of agent to act in the best interest of the principal. एजेंट की ये फिड्यूशरी ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ ट्रस्ट है कि देखें प्रिंसिपल ने उस पर ट्रस्ट किया है तो अब उसने उसका भरम रखना है. It is a duty of the agent to act in the best interest of the principal. उसने सेल्फ इंटरेस्ट में काम नहीं करना, उसने प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को मॉनिटर करना है, प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को इंश्योर करना है कि व्हाटएवर द ऑब्जेक्टिव है वो मीट हो जाए. एंड इन कंसिडरेशन एंड इन रिस्पॉन्स
the agent will be getting the remuneration, the salary, the benefits from the principal as well. बट यहां पे ग्रीडी नहीं हो जाना. यू हैव टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल. अब ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं और अगेन इसका कंपनी के साथ क्या रिलेशनशिप है. सो कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में एजेंसी क्या होती है ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है. देखिए मैंने अभी आपको कहा कि हमारे पास दो टाइप्स की कंपनीज आ रही हैं. एक हमारे पास आ रही है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक हमारे पास आ रही है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. थोड़ा सा जरा इसको समझिएगा कि ये जो प्राइवेट लिमिटेड है इसके शेयर्स फ्रेंड एंड फैमिली में होते हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं यही यूजुअली कंपनी को मैनेज भी कर रहे होते हैं. शेयर होल्डर्स जो कि कंपनी के ओनर्स हैं आर मैनेजिंग द कंपनी एज वेल यूजुअली. सो यूजुअली shareholders are managing the company as well. जबकि मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो वो एक टर्म अभी आपको याद आ जाएगी जो हमने डिस्कस की थी. वो हमने कहा था कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल. सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल इसका क्या मतलब था. इसका मतलब ये था कि जो कंपनी चला रहे हैं वो अलहदा लोग हैं, यानी जिनके पास कंट्रोल है, जिनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर है, या शेयर होल्डर्स ने जिनको वो अथॉरिटी, वो अटर्नी ट्रांसफर की हुई है और खुद वो कंपनी के बाहर बैठे हैं. So shareholders are sitting outside the organization in the context of the public limited companies. They have just invested within the company. They are considered to be a layman. They have the money, but they do not have the knowledge, the expertise to run the company. That is why they need some people to act on their behalf, to run the company, to manage their investment, to look after the affairs of the company. So separation of ownership from control का मतलब क्या है कि shareholders are sitting outside the organization and someone else is managing the company, those who are known as the management or the directors. So इसलिए मैंने आपसे कहा कि I'm going to form a relationship of the agency with the company. So relationship क्या बना? The relationship is that in the context of the company, shareholder is the principal. The shareholders are the principal, and directors या management. Directors are the agents. So in the context of the company, shareholder is the principal and directors are the agents. अब again यही वाली बात, it is the duty of the agent, and in particularly, it is the duty of the directors to act in the best interest of the principal, which is the shareholder. अब shareholders are sitting outside the organization and they have given their investment plus the power to the directors and the management to run the company on their behalf. So it is the responsibility of the directors to run the company in the best interest of the shareholders. लेकिन ऐसा हो नहीं पाता समटाइम्स. या पास्ट के अंदर कॉर्पोरेट स्कैंडल्स हुए बहुत ज्यादा, जिसके अंदर ये देखा गया कि डायरेक्टर्स ने तो अपनी जेबें भरना शुरू कर दी. दे स्टार्टेड एक्टिंग इन देयर ओन इंटरेस्ट. क्या करते थे कि अपने बोनसेस के लिए, अपने रिवॉर्ड्स के लिए ऐसी ट्रांजैक्शंस कर देते थे जो कि उनके लिए तो फेवरेबल होती थी कि शॉर्ट टर्म में उनको बोनस मिल जाता था, बट लॉन्ग टर्म में वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं होती थी, या शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट करती थी, लॉन्ग टर्म में लॉस कर देते थी. तो क्या करते थे कि डायरेक्टर्स अपना बोनस लेके रफू चक्कर हो जाते थे. दे मूव टू अनदर कंपनी और फिर बाद में जाके वो जो उसके सर्कमस्टांसेस होते थे, वो जो उसकी प्रिकॉशंस होती थी, वो क्या होता था कि वो किसको बियर करने, रिपरकशंस होती थी, वो किसको बियर करने पड़ते थे? वो शेयर होल्डर्स को बियर करने पड़ते थे. सो याद रखिए कि जहां पर भी एजेंसी रिलेशनशिप होगा वहां पे एजेंसी प्रॉब्लम
एग्जिस्ट करती है। जहां पर भी एजेंसी रिलेशनशिप होगा तो वहां पे एजेंसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। वो प्रॉब्लम क्या है? द एजेंट may start acting in their self-interest rather than in the best interest of the principal. वो अपनी जेबें भरना शुरू कर देते हैं। They start filling their own pockets rather than acting in the best interest of the principal. यही हुआ अगर आप पास्ट में बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्कैंडल्स निकाल के देखें, और वो उन कॉर्पोरेट स्कैंडल्स का इंपैक्ट years तक रहा कंपनीज पर भी, इकोनॉमी पर भी, because they were quite huge companies. So corporate scandals, just look at the names of those things, या अगर कहीं पे समरी पढ़ी हो तो just read it कि क्या हुआ एनरॉन में. इट वाज अ यूएस एनर्जी बेस्ड कंपनी एनरॉन. क्या हुआ आपके पास साउथ सीज में, क्या हुआ आपके पास लेमन ब्रदर्स में, ठीक है, क्या हुआ .com में, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये जितने भी कॉर्पोरेट स्कैंडल्स हुए हैं, इसके अंदर एक ही कॉमन बात ऑब्जर्व की गई. वो एक कॉमन बात ये थी कि डायरेक्टर्स ने, जो एजेंट्स थे, दे एक्सप्लॉइटेड देयर पोजीशन, दे एक्सप्लॉइटेड देयर अथॉरिटी to have the personal gains. So the common thing in all those scandals were that the directors exploited. exploit करना क्या होता है? एक होता है एक्सप्लोर, एक होता है एक्सप्लॉइट. एक्सप्लॉइट करना क्या होता है कि जब आप अपनी पोजीशन का, अपनी अथॉरिटी का फायदा उठाएं. सो द scandals, directors exploited their power and authority for personal gains. और इवेंचुअली क्या होता था कि वो खुद तो जेबें भर के ले जाते थे, लेकिन nothing was left for the shareholders. और इवेंचुअली उनकी इन्वेस्टमेंट डूब जाती थी, नुकसान हो जाता था. सो काफी अरसे तक ऐसा चलता रहा कि देयर वर नंबर ऑफ कॉर्पोरेट स्कैंडल्स, पीपल वर इन्वेस्टिंग विद इन द कंपनीज. और अगर आप इसके बहुत ही पीछे चले जाएं, यानी बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करें, सो लोगों ने क्या किया कि गवर्नमेंट को रीच किया कि ये क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ बिजनेस, वी इन्वेस्ट इन, और फिर हमारे पैसे डूब जाते हैं और हमारे पैसे के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी भी नहीं है. नो वन इज लायबल टू रिटर्न अस द मनी. तो पहला स्टेप जो यूके ने किया था, वो क्या किया था कि उन्होंने कंपनी का स्ट्रक्चर ही बंद कर दिया. बहुत पुरानी बात है. कंपनी का स्ट्रक्चर ही बंद कर दिया कि भाई ऐसे स्ट्रक्चर में, इस फॉर्म ऑफ द बिजनेस में बिजनेस ही नहीं होगा. देन उन्होंने देखा कि यार बाकी कंट्रीज तो लाइक अमेरिका, ये सारे तो इस तरह कंपनी चला रहे हैं, उसके तो इकोनॉमी को अच्छा खासा फायदा हो रहा है. तो उन्होंने बैठ के सोचा कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा कि हम कंपनी के स्ट्रक्चर को अलाउ कर दें और उस पर कोई चेक एंड बैलेंस भी ना हो. तो देयर शुड बी सम चेक एंड बैलेंस ऑन द कंपनी एंड देयर डायरेक्टर्स एंड देयर मैनेजमेंट. हम उनको एक गाइडेंस प्रोवाइड करें, एक गाइडलाइन प्रोवाइड करें, एक उनको बेस्ट प्रैक्टिस प्रोवाइड करें, या उनको एक लॉ बना कर दें कि यार अगर आपने कंपनी को चलाना है तो फिर आपने ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं वो फॉलो करनी है. जब हम उनको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर देंगे, जब उनको एक गाइडेंस दे देंगे और वो उसको फॉलो करेंगे, दे आर ऑब्लाइज्ड टू फॉलो दैट, तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट नहीं डूबेगी, फ्रॉड्स नहीं होंगे, मार्केट में इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बहाल हो जाएगा.
सो क्या किया उन्होंने, कहा कि यार हमें एक गाइडेंस की जरूरत है। तो वो जो उन्होंने सोचा कि हमें एक गाइडलाइन और एक गाइडेंस प्रोवाइड करने की जरूरत है टू द कंपनीज, उसको बेसिकली कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट कंपनी और गवर्नेंस मींस हाउ टू गवर्न द कंपनी, हाउ टू डायरेक्ट द कंपनीज, हाउ टू कंट्रोल द कंपनीज। सो क्या किया गया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस कराया गया। अब इसकी डिफरेंट हिस्ट्रीज हैं। अगर आप देखें यूके की पर्टिकुलरली बात करें तो उन्होंने 1992 से इसको स्टार्ट कर दिया मेनली। पहली रिपोर्ट उनकी कैडबरी रिपोर्ट थी, उसके बाद डिफरेंट स्मिथ रिपोर्ट और ये सारी रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई। हर हर रिपोर्ट के अंदर वो कुछ एरियाज को एड्रेस कर देते थे कि यार अच्छा इस एरिया के बारे में ये गाइडलाइन है, इस एरिया के बारे में ये गाइडलाइन है। और ये सिलसिला आज तक चलता आ रहा है कि एवरी ईयर वी हैव द न्यू guidelines, new guidance, new best practices related to the corporate governance. हर हर थोड़े से बाद वो रिवाइज हो जाती हैं। यूएस के अंदर ये जो एनरॉन वाला स्कैंडल हुआ था 2001 के अंदर, सो 2001-2 के अंदर यूएस के अंदर जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंट्रोडक्शन हुआ, बट यूएस के अंदर हुआ इन द फॉर्म ऑफ द लॉ। सो इसका मतलब है कि सबसे पहले तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को डिफाइन कर लेते हैं, देन फिर समझते हैं कि ये कुछ कंट्रीज में क्या है। और जिस तरह अमेरिका में है, मैंने कहा कि इट्स अ फॉर्म ऑफ लॉ। तो ये क्या डिफरेंस क्या है, सो पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस को डिफाइन करते हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सिस्टम थ्रू विच या बाय विच companies are directed and controlled. सो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सिस्टम है जिसके थ्रू कंपनी को डायरेक्ट किया जाता है। डायरेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है कंपनी को कि आपने इस तरह चलना है। कंट्रोल का मतलब हाउ टू गवर्न इट, कंपनी को कैसे चलाया जाएगा, कंपनी की डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, कौन सी चीजों के डिसीजन कौन करेगा, किसकी क्या अथॉरिटी होगी। ईच एंड एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड विद इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो इस सिस्टम के आने से क्या हुआ, बेनिफिट्स क्या हुए। मैंने आपको बताया कि पहले तो कोई सिस्टम ही नहीं था, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं था कंपनी पे, कोई गाइडेंस ही नहीं थी जो उनको फॉलो करनी होती थी, कोई चेकलिस्ट ही नहीं थी जो उनको फॉलो करनी होती थी। उसके तो उसकी रिपरकशंस क्या थी, उसकी रिपरकशंस कोई कॉर्पोरेट फ्रॉड्स थे। फिर लोगों ने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया। जब इन्वेस्टिंग हैबिट नहीं होगी तो इकोनॉमी, लोग पैसा घर रख के बैठे हुए हैं, दबा के बैठे हुए, तो जाहिर बात है वो पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं होगा, इकोनॉमी को उससे कोई फायदा नहीं होगा। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेनिफिट क्या हुआ कि इट इंक्रीज्ड या एनहेंस्ड द शेयर होल्डर्स कॉन्फिडेंस। इसने शेयर होल्डर के कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया, क्योंकि शेयर होल्डर्स को पहले तो कंसर्न्स थे ना कि यार कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, पैसे हमारे डूब जाते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो फिर जब उस पे एक बॉडी ने, कौन सी बॉडी ने, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, जब चेक रखना शुरू कर दिया तो उनको कॉन्फिडेंस बहाल हो गया कि यार अच्छा समवन इज लुकिंग आफ्टर अस। फिर मार्केट स्टेबल हो गई, रिडक्शन इन द फ्रॉड्स एटसेट्रा, ये सब बेनिफिट हो गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आने के। सो अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो ये दो तरीके से चलता है। इफ यू टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की दो अप्रोचेस हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अप्रोचेस जो हैं वो दो हैं। ये कौन कौन सी अप्रोचेस हैं? वी हैव द प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, and we have the rule based approach. Principle based approach and the rule based approach.
प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच क्या होता है? इट्स नॉट अ लॉ, रिमेंबर, इट्स नॉट अ लॉ। देखिए, जब आप लॉ बना देते हैं तो लॉ की नॉन कंप्लायंस यानी लॉ को फॉलो ना करना इज अ क्राइम। सो इट्स नॉट अ लॉ, इट्स, ये लॉ नहीं है, इट्स द बेस्ट प्रैक्टिस। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है? जिस तरह फॉर एग्जांपल कुछ पेरेंट्स होते हैं, अगर वो बच्चों पे चीजें इंपोज करते हैं, वो एक फैसला कर लेते हैं, दे टेल देयर किड्स टू डू दिस वे। और कुछ पेरेंट्स होते हैं, वो एक पोजीशन, एक सिचुएशन बच्चे के सामने रख देते हैं, एंड दे से यू डिसाइड व्हाट इज बेटर फॉर यू। सो बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि आपने कंपनी के सामने एक गाइडेंस रख दी, एक गाइडलाइन रख दी, एक तरीकेकार रख दिया, एंड देन यू टेल देम कंप्लाई और एक्सप्लेन। या तो हमने जो आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोवाइड किए हैं इसको फॉलो करो, इसके साथ कंप्लाई करो, या फिर एक्सप्लेन करो कि आप इसके साथ कंप्लाई क्यों नहीं करें। सो सी, एक्सप्लेनेशन इज नेवर इजी। जब आपने ये बताना है कि आपने इसको क्यों फॉलो नहीं किया, सो यू शुड हैव अ सॉलिड रीजन फॉर दैट। बट इसका फायदा क्या है? यही तो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है कि मे बी व्हाट वी आर टेलिंग देम उनके लिए अप्रोप्रिएट ना हो, उनके पास इससे भी कोई बेटर तरीका हो कंपनी को चलाने का, इससे भी बेटर कोई अंदाज हो शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने का, इससे भी बेटर कोई अंदाज हो फ्रॉड को रिड्यूस करने का। सो दे गिव द कंपनीज रूम कि आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंगली, अपने कंपनी के साइज के अकॉर्डिंगली, कंपनी की नेचर के अकॉर्डिंगली, यू सी if you can comply with those things, then it's the best practice. But if you cannot comply, you have to explain why you are not complying. For example, CEO and the chairman, we know these are two different positions. हमने सुना है, वैसे इसकी डिटेल्स क्या है आगे जाके हम पढ़ेंगे, लेकिन फॉर राइट नाउ ये दो डिफरेंट पोजीशंस हैं, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड द चेयरमैन, सीईओ एंड द चेयरमैन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिस के मुताबिक ये दो सेपरेट लोग होने चाहिए। One person should not have the both roles, although legally ये allowed है। That is why I said it's not a law. अगर आप लॉ में, कॉर्पोरेट लॉ में जाके ये बात पढ़ेंगे तो legally it's allowed that one person can have both of the roles. बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेस्ट प्रैक्टिस के मुताबिक सीईओ और चेयरमैन दो अलग लोग होने चाहिए टू इंश्योर मोर अकाउंटेबिलिटी, मोर चेक एंड बैलेंस। सो या तो आप कंप्लाई करेंगे यानी सीईओ चेयरमैन अलग बंदा रखेंगे, या यू हैव टू एक्सप्लेन इट, and many companies did it. For example, back in 2004 and 5, Marks and Spencer, they were having a single person working as a CEO and the chairman, and they were not complying with the best practice. Then they explained it, okay, why we are having a single person having two roles. Maybe there is a strategic reason for that, maybe they have the solid reason for that. So principle based approach allows you, gives you a room कि या तो आप comply कर लें या explain करें. And when you talk about the rule based approach, so rule based approach, it is a law, a law. जब law की बात करते हैं, you know, law is coming from the parliament, lawmakers के through आ रहा है, and the only option over here is to comply. Law के साथ आपने comply करना है, adherence to the law, comply करना है law के साथ. There is no other option. And failure to comply with the laws and regulation results in fines and penalties and even the cancellation of the company's license. So ये जो best practice है, ये जो best practice है, मैंने आपसे कहा था कि अब ये आ कहां से रही है, इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. This best practice is usually coming from the Securities and Exchange Commission, जिनके थ्रू कंपनीज रजिस्टर होती हैं, जो कि दायरा है जो कि हर कंट्री में होता है. फॉर एग्जांपल सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ फ्ला फ्ला फ्ला, ठीक है, वो कंपनीज को गवर्न कर रहा होता है, उस उन्हीं की तरफ से ये बेस्ट प्रैक्टिसेस आती हैं. व्हेन यू टॉक अबाउट द लॉ, व्हेन यू टॉक अबाउट द सोर्स ऑफ लॉ, तो द सोर्स ऑफ द लॉ इज द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट की तरफ से लॉ आता है. सो अगर आप बात करें प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच का, फॉर एग्जांपल यूके के अंदर यूके कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पाकिस्तान के अंदर
पाकिस्तान कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वी टॉक अबाउट द सिंगापुर, वहां पर भी मलेशिया और मलेशिया, whatever you pronounce it, सबके अंदर etc. principle based approach है. When you talk about the US, they are famous for their strict approach. So, for example, the US, they have the law which is Sarbanes-Oxley or Oxley Act, which is in short known as SOX. So corporate governance की दो types की approaches हैं. We have the rule-based approach and we have the principle-based approach. And what is corporate governance? Is a system through which companies are directed and controlled. And corporate governance का background क्या है? Corporate governance का background is agency theory and then the agency problem attached to it. कि ideally तो ऐसा होना चाहिए कि agent principal के interest में काम करे, but when they see the money, they start acting in their own self-interest. और फिर लोगों की investments डूब गई और corporate scandals हुए. Then there was a need of something कि in the form of principle, guidelines, a system, law, whatever it is, वो आए और वो मैनेजमेंट को पता हो कि भाई अब ये हमें फॉलो करना है ताकि बेनिफिट क्या हो, शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट हो, कंपनी के एसेट सेफ गार्ड हो, मार्केट स्टेबल हो जाए, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल हो जाए, फ्रॉड रिड्यूस हो जाए, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग हो जाए. ये सब के सब बेनिफिट्स जो हैं वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेनिफिट्स हैं.